Namaskar to all our viewers. Welcome to Kahani Kashmir Ki. This is your host, Deepika Zutshi, Sarni Myon Hatat Namaskar. Welcome to the show. Thank you. Today I have a very, very special show for you. And I will tell you, I'll give you a brief introduction. You see the wonderful gentleman on the screen. He is a very well-known face and a very well-known name in the Kashmiri Pandit community. He's Dr. Kaul, and with all the different hats that Dr. Kaul wears, I will introduce gradually. We will peel the layers of the onion with Dr. Kaul, and we will gradually uncover a lot of the different hats that he wears. But today, I'm going to show you also a very, very special aspect of Dr. Kaul's expertise. And that is, I'm going to introduce him to you as a historian. And let me tell you why. Because we all know he comes from a very well-known and reputed Kashmiri Pandit family. His dad was the chief engineer in Kashmir, in Srinagar. His mom, very accomplished, head of department of the Kashmir University, head of department Hindi of Kashmir University. So we all know that much about him. But today we are going to talk to him a little bit in depth about his work, his expertise, and also his thinking about the history of Kashmiri Pandits and the exodus and where we are going. And then we'll go into the future of that as well. So I'm going to stop talking now and introduce all of you to Dr. Vivek Kaul. Dr. Kaul, it's an honor to have you on Kahani Kashmir Ki. Namaskar, Zutshi. Thank you. I'm really honored that you're interviewing me, and a lot of Kashmiri Biradari will know some more facts which they may have known, or they will just brush them up in their memory. Yeah, true. Dr. Kaul, I do want to let everybody know that you're based in Oxford, and we had a very, very critical outcome today of an election that was very hotly contested. Tell us a little bit about that, and how was the atmosphere with Rishi Sunak and Liz Truss, and what happened and what was your involvement? Yes, thanks for asking me that. As you would have known by my Facebook post, I was very close to Rishi ji. Normally, I'm a very unbiased person and I don't get swayed by emotions. But in Rishi, maybe about 2 months ago, I saw a different kind of person. I saw a very sincere person. And I thought that I should do my best to help him. And help we did. We were at the hustings, they are called, where they go to different small election areas like in India, but they have their own members and they talk to them and tell them why he is the best or why she is the best. So I thought of going to these hustings even away from my Oxford. So I covered maybe sometimes 100 miles or more than that to ask him questions. And I found a very sincere person. He used to come always on time, or even half an hour before time, meet everyone, listen to all the people, and even go for a walkabout in the town, which he would address. And the first hustings, I asked him 2 or 3 questions, which were in my mind. One was about grooming gangs. What would they do? Because the politicians here have, put it under the carpet. And I wanted a sincere answer from him, which he said, yes, Vivek, I'm very happy that you asked this question, because a lot of British English people don't ask me this. They don't ask. They're a very tight-lipped society. They will not ask these questions. They feel they have a different mindset. So he said, look, Vivek, I will have a task force, a special task force which will look into it, and so that they don't get parole and they get long prison sentences, the people who have done these atrocities on young girls.
and some as 12 or 13, and even I have got two daughters, he said, and I will make sure that these kind of people do not walk on the streets of this country. So there was a lot of applause for his answer, and even after the hustling people came to me, the English, and they said, Vivek, we're very thankful that you asked this question, which is very, very difficult question to ask. So I found him in summary, I found him a very honest person. But at the back of it, we knew that the going will be very uphill for him because, as many Indians may not know, the Tory party, which is the short form of Conservative Party, the two parties called Tories, they have about 170,000 members, paid members. You have to pay about £25 to be the card-carrying member. I am one of this many years. So the thing is that in this country, in Tories, if it is 170,000, about 70% of them are over the age of 60. They're very set in their ways, and they're not poor. Tory is a party of very rich upper middle class English people. The poor people generally go towards the labor side. That is how it works out. Correct. So I also knew that many of these 60-plus-year-old Tories are basically biased. They are or what you would call in plain English racist. Whatever comes to them, they will definitely side with their own. But after looking down, I said, look, they may be racist, but these racists, these upper class, they're pretty intelligent. I thought they would still side with Rishi, knowing that what disaster the other candidate would bring in, and which was proven right, because Rishi got about 60,000 votes as compared to the 80,000 votes of the other list. So a lot of about 60,000 people did vote for him. Right, and that's what I noticed, that the margin wasn't that much. It wasn't like it was a hands down victory. No, it wouldn't have been. It wouldn't have been. I knew it. I told Rishi's team that it will never be like that. And you would have seen when the last hustings happened at Wembley, the whole house broke down. The young English had come down, young English boys, girls. The multicultural people had come, and Liz almost had no applause. It was and we were so happy that his parents, Rishi's parents, I met them, and wife was there in the hustings in the Wembley Stadium, and we thought that they should get this kind of feedback that how well their son or husband is doing. True. But he will be back. He will be back. He's normally in British politics. Once you're gone, you're gone. There has been only one exception. Churchill, when he lost after the war, he didn't come in 50s for another term. That is a very exceptional thing. But Rishi is so sincere and so full of ideas, and he will definitely come back. Great. Thank you for such a great outline and a background of the very current situation. So thank you for that. Okay, since we are on Kahani Kashmir Ki, let's get back to the topic. So I want to start, Dr. Kaul, first with a little bit about your childhood. Tell our viewers a little bit about your childhood and वो कैसा माहौल कैसा था जिसमें आप बड़े हुए, आप पले बड़े. Tell us a little bit about that, sir. I belong to a middle-class Kashmiri Pandit family. और luckily, मेरी जो मम्मी थी, she belonged to a very educated family. उनके daddy was in accountant general's office in Maharaja. He had earned real 7 gold medals in Punjab University, 24 carat ones. He was an actuarial guy. He was a mathematician. So he was in the accountant general's family office. So my mom and my mamaji, they were all very, very highly literate people. And then dad was another champion. Dad belonged to a Kashmiri Pandit family, but he was the state topper. He was always topper from matric till wherever he was. He went to. In those days, there were no IITs. So he was sent. There was no engineering college in Kashmir. So he was sent to Jadavpur. Jadavpur used to be a very good engineering college before IIT.
All his teachers were Bengalis who had come from MIT and those places. He was very highly placed there, and their principal wrote to Siemens, Germany, that I got an exceptional candidate. Can he come over? So my father traveled in a ship via Colombo, Egypt, Alexandria, Marseille, and went to Germany, and he didn't know German, the language. So there was an interview the Siemens had with AEG and all. They were very happy with the intellect in front of them. And in 15-20 days, he picked up German. And he became very popular in their office, in the factory. And even one day, one of the Germans had a problem, which is one of the DC circuits they were made. He was going to every engineer to solve it. And he came to Daddy, and Daddy said, that wire should go to the other side. And it worked. And Daddy, when he went to collect his salary, it was double what he was getting. So he said, he told the guy, the salary something wrong with my pay slip. He said, no. The person whom you helped was the Siemens. He was one of the owner of the company. Oh, wow. So he was so happy with you. And, so he was highly placed in Germany as a very young guy. And unfortunately, his father expired due to an accident in Kashmir. He had to come back from Germany. And Siemens were very unhappy to leave him after 2-3 years. He was doing very well. He was in the inner circle, giving ideas what to do. And in Kashmir, also, when he joined as a junior engineer, he was very popular. He was so popular that Bakshi Ghulam Ahmad, the chief minister, and at that time, the power minister was Mir Qasim, who later on became the chief minister in 70. They came to know him. They brought him, and they knew a great brain has come, and he has made a lot of these electric power stations in Germany. So they said, Ganderbal power station has to be updated, and Mora power station has to be rebuilt. So they made Daddy in charge, which obviously in Indian or Kashmiri setup, a lot of his chief, senior engineers would not have been happy. They would have been jealous. One young guy of 20-something, late 20s is coming and heading all these things. But he was an exceptional talent. And then he was sent to Hungary to buy the best, power generators. And he spent 6 months there, improvising the Hungarian thing. And he was living there for 6 months and got them. And they were installed in Ganderbal and Mohra. And I'm happy to tell you that those Gans Mawag was the company. They were meant for 10 years, their guarantee. They're still running. They're still running after 50 years. Wow. That was the type of Daddy's innovation in those. So he was a very proud man, a different kind of Kashmiri Pandit. He was not, even Mummy, she was from Miranda House, and her teachers were this, famous poet Dinkar, the Ramdhari Singh Dinkar. Ramdhari Singh Dinkar, correct. He also came to our house later on. So we were from this kind of family. We were very proud, and everything was because of education. There was no, we were not rich from there was no family richness or old money. It was all they had earned there because of their education. And then Daddy came, and I was born in 60s, and I was born with a kind of silver spoon, because we had so many things from Germany. Daddy had called record player, he's called a fridge, which was never there in 60s, pressure cooker in 60s, late 50s. His mother used to always bless him that from that, daan mein chun dalne ke baghair, her life had become so easy. She could make these yakni and rogan josh in pressure cooker in minutes. पहले तो उठते 4 बजे उठती थी, ज़्यून कलेक्ट करती थी, फिर जलाती थी, पूरा दिन का एक होता था। फिर 4 बजे उनको टाइम मिलता था बाकी कश्मीरी लेडीज से थोड़ा सा ये समावर में चाय या पीने को और खीर चाय पीने को टाइम मिलता था। So I was in that kind of atmosphere, and I knew, because of Daddy, I knew these people, Bakshi Ghulam Ahmad ho, ya Mir Qasim ho, ya Farooq Abdullah ho, ya Sheikh Abdullah. I had met them at a very young age. Daddy used to take me. बोलता यार तुम मेरे साथ आया करो. At least I was 9 or 10. बोलता ऐसे मालूम चलेगा कि बात कैसे कर रहे. How do you talk to people? Otherwise you will never know.
how What a great learning! What a great learning! Yeah. So always take me to मीर कासिम ने बुलाया, डैडी को बुलाता था, यार प्रॉब्लम है वो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की, क्या करना है उस गांव में। तो डैडी बोलते हैं चलो उसके घर में जाके समझाते हैं, व्हाट इज द टेलीफोन पे क्या समझाना है। तो वो वहां पे ही रहते थे, बरजुला में रहते थे, वी वर लिविंग इन जवाहर नगर, तो 10-15 मिनट का रास्ता था। तो ऐसे ही मतलब टू टेल यू ऑनेस्टली, मेट शिवनारायण फोतेदार, जो फोतेदार चैंपियन थे, जो राज्यसभा के मेंबर थे 50s में, उनसे मिलते थे, मिला था। ही वाज अ वेरी डैडी, according to daddy, he was one of the very few Kashmiri Pandits he used to really respect. बोलता है this is an intellect. और दूसरा वो प्रकाश सीड फॉर्म के SK कोल होते थे, उनको रेगुलरली मिलते थे। These two Kashmiri Pandits daddy used to have very high regard, even mummy. They say they are very honest, they help you, and they don't have any hidden agenda. So it was almost Shimar and Fotetar, who was the Rajya Sabha member because of his intellect. Nehru had made him in 50s, and the other was this SK Kaul, I think his name was, who was the Prakash seed form. जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो चक्की स्वीट के पीछे वाली से लेके वो, he used to own that. He was a very nice man. कांग्रेस के लीडर भी थे शायद वो। तो ये चाइल्डहुड की मेमोरी है, एंड आई हैव मेट ऑल दिस, जो भी आपके मन में नाम होगा सबसे मैं मिला हूँ। Daddy used to tell me, you just sit there and observe. Just observe. Just don't. मैं तो मुझे क्या करना है? अगर अभी मेरे बच्चे ऊपर हैं, उनको मैं बोलूंगा, कोई आया बोलेंगे मुझे, we don't. They're like American kids. They will fight. They'll say, what have we got to do with this? Why should I go to somebody's house with you and all that? But उससे ये फायदा हुआ कि I came to know how to deal with people, how daddy talks, humor कैसे use करते हैं, how to be honest. इंदिरा गांधी से भी डैडी की एक दो बारी मुलाकात हुई थी, because daddy had criticized her in a meeting in Kashmir about, because एक IAS officer था, power secretary था, as usual he was a young chap, he was trying to tell daddy, समझाने ने बोला, इस बच्चे को ओम्स लॉ भी नहीं मालूम है। इंदिरा गांधी को, इससे मैं क्या डिस्कस करूंगा, ये 20-25 साल का बच्चा है, he is not even read engineering, how can I teach him what to do? So Indira Gandhi called daddy to Delhi to have a one-on-one. I had also gone. Oh wow! She was very nice. She was a dignified lady, chai wai, and biscuit. She knew Kashmiris like tea, so she had made it high tea. It was not a dal mungra nahi tha, kafi cheezeं rakhi. So that is what Kashmiris bring, of both religion. We give respect. We are great. Hospitality देते हैं, and we expect hospitality, Right. तो ऐसे माहौल में था, you can ask me another question. तो ये माहौल था। So this is your personal upbringing, और कैसे आपकी फैमिली कैसे थी, आपके आसपास का आप बोल रहे हैं कि you went everywhere, और आप लोगों से मिले, पॉलिटिशियन से मिले और बाकी स्टेट्समैन से मिले, आपकी ऑब्जर्वेशन में, आपकी मेमोरी में, what was the general feeling, and how were people, a lot of people say, अरे हम सारे हिंदू मुसलमान बहुत अच्छी तरह से रहते थे, बहुत प्यार से रहते थे। आपकी मेमोरी और आपकी ऑब्जर्वेशन में वो एक्सपीरियंस कैसा था? It's pretty mixed ऐसा है कि जिन सर्कल्स में हम घूमते थे वहां पे भेदभाव नहीं था, because they used to respect daddy, respect because he had good knowledge. एक वो भी था कि वो विलायत से आए, वो विलायत used to be a degree. He was in 50s, he had spent so much time in Germany, when in Germany there were only 80 Indians थे जर्मनी में, तो वो तो हाई कमिश्नर को सब कुछ जानते थे, एम्बेसडर, डांसिंग चैंपियन, मतलब बॉलरूम चैंपियन ऑफ सीमंस, तो हर एक पार्टी में बुलाते थे। He was a very outgoing person, very different. तो इस हिसाब से our family में जो माहौल था, we were meeting people at a very high, जैसे एक चीफ सेक्रेटरी था, उसकी भी कहानी मैं आपको कभी बताऊंगा, इंटरेस्टिंग है, because it tells you about how we feedback about Kashmiri Pandits he gave me once. आप मुझे याद दिलाना, बाला साहब ठाकरे की कभी बात करेंगे about his educational reservation. Yes, oh definitely, yeah, bilkul. Even the chief secretary जो बख्शी गुलाम मोहम्मद के थे, he was very close to my father, because he found that daddy was a doer. इंडिया में क्या होता है कि ये नहीं होगा, डैडी बोलते थे ये होगा, उन्होंने जर्मनी से सीखा था। When you work with these Europeans, or you come to a solution, you don't have negative attitude. डैडी का था कि होगा,
तो he used to like, बोलता है यार ये बंदा तो हर वक्त बोलता है होगा होगा, तो we were his friend, we were his lifelong friends, even when he was not चीफ सेक्रेटरी. उनका जबरदस्त मकान था वहां पे अपने जहाँ पे हेडवन SMHS हॉस्पिटल है उसके पास एक ह्यूज फेमस लोग थे वो पीरजादा. तो उनसे भी they were very so we knew all these Kashmiri top Kashmiri Hindu and Kashmiri Muslim families both. बट डैडी ने मुझे, मम्मी ने मुझे ऐसा इंसान बनाया था, बोला था यू बी वेरी अनबायस्ड, डोंट टेक साइड्स. मेरा बचपन से ही एक एटीट्यूड है, डैडी का भी एटीट्यूड रहा है, डोंट टेक साइड्स, बी ऑब्जर्व. ऐसे आपने मुझे बोला ऑब्जर्व क्या करते थे, ऑब्जर्व में बहुत कुछ करता था, इसीलिए तो मैं थोड़ा डिफरेंट लिखता हूँ. मैं देयर वाज डेफिनेटली आप 50s में बोलो तो पहले ही शेख अब्दुल्ला ने तो वो लैंड फॉर टिलर बोल के कश्मीरी पंडित की जितनी भी मैक्सिमम लैंड थी वो जब्त कर ली थी. नेहरू एंड अदर्स लुक्ड द अदर वे. तो वो एक जुल्म हुआ था, देयर वाज अ बिग जुल्म, देयर वाज नो कंपनसेशन पेड जस्ट बिकॉज़ यू वर वेल रेड, यू हैड मनी, योर लैंड वाज टेकन अवे फ्रॉम यू. अब आपको मुसलमान ये बोलेगा भैया हमको कश्मीरी हिंदुओं को ही जॉब मिलता था. आई विल टेल यू व्हाट डिस्को रोड व्हेन डिस्को ओपन्ड द फर्स्ट इंग्लिश स्कूल इन कश्मीर इन 1880s. मुसलमान जाते ही से पढ़ने के लिए, बोले हमको कन्वर्ट करने आया है, फुटबॉल से कन्वर्ट करेगा, बॉक्सिंग से कन्वर्ट करेगा. तो ओनली कश्मीरी हिंदूज यूज्ड टू गो एंड बी हिज स्टूडेंट. So with the result, Kashmiri Hindus learned English, they knew how to talk, so they got the job. You know, when Maharaja ke time pe, jobs were to be given to the best. So it was not that Muslims were discriminated, it was that they were not educated, they had not come out from their madrasa education. तो madrasa education में ही रहते थे. आपने एक टर्म सुनी होगी, जबरी स्कूल. Right. Parents या grandfather बोलते हैं वो स्कूल है जो तो जबरी स्कूल है, मतलब saying that it comes to useless. जबरी स्कूल were made by the Maharajas to जबर पकड़ के मुसलमानों को पढ़वाते थे, जबर करके. उनको खाना भी मिड डे मील स्कीम होती थी और जबरी उनको स्कूल में लेके पढ़वाते थे कि आप पढ़ो, because he wanted to give them jobs, but jobs के लिए तो कुछ एजुकेशन होनी चाहिए. तो लैंड फॉर टिलर वाज आवर, ने कमाया था वो पैसा, हमने जमीन में डाला था. तो वो आगे शेख अब्दुल्ला ने, बिकॉज ही वाज ए बिगेड कम्युनल बंदा था, ही वन प्रोमोगेशन से ही टुक ऑल द लैंड बैक फ्रॉम कश्मीरी हिंदूज. ओवरनाइट द कश्मीरी हिंदूज बिकेम डेस्टिट्यूट. देयर वाज 51 52 and 53 में also he continued his bakwas, and 53 August में he was jailed because he started saying that August 8th या 9 वो फ्राइडे था, फ्राइडे का उसने तकरीर मारा था as usual. Then he went to sleep, go to Gulmarg, and as वहाँ एक हट था उसका, वीकेंड था, वहाँ जाके फिर 4 बजे पुलिस ने ठक करके he was taken to jail. So for about 20 years he spent on sedition charges. So, correct. But बख्शी गुलाम मोहम्मद का टाइम, डैडी कहते हैं, was very good for Hindus. The guy was उस जमाने में कश्मीरी हिंदू और कश्मीरी मुसलमानों में इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बहुत थी. It was not that we were given some gold medal. It was because we were well read. हम पढ़ते थे. Education is everything. Even you would have gone you or your husband would have gone to different countries because of education degrees. There is no other factor. So बख्शी गुलाम मोहम्मद, डैडी बोलते हैं काफी सेकुलर था. He had a great memory as well. डैडी इसको बहुत मिलते थे. डैडी इसको 75 तक जब वो गुजर गए तब तक मिलते थे. मैं भी जाता था मिलने as usual. Poth Maharaj, like a Poth Maharaj. I used to Kashmiris will understand what Poth Maharaj is. Of course. ब्रॉडवे थिएटर के पास रहते थे, वहाँ तब भी जाता था. आउट ऑफ पावर भी डैडी के भी किसी को छोड़ते नहीं थे. आउट ऑफ पावर बोलते हैं you learn lot of things, from these. तो वो डैडी बोलते हैं कि he was very secular. उसने that was the golden period of Kashmiri Hindus. Though many Kashmiri Hindus, because of their education, were not getting jobs because there were not many jobs available. So they were going to rest of India. Some were going, very few were going abroad. But as far as possible, Bakshi Saab की जो tenure था 60-61 तक was very secular. A lot of Kashmiri Hindus thought that this guy is the second Badsha. Badsha को तो आप जानते हैं, Badsha का दौर काफी अच्छा माना जाता है. After Sikandar Butshukun, that he was very nice to Kashmiri Pandits in 14th century or whatever. तो इसको भी Badsha ही बोलते थे.
और डैडी इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन. बोलते हैं कि ये बंदा ठीक था. बोलता है यार वो जैसे जवाहर नगर में जब प्लॉट डिस्ट्रीब्यूट, जवाहर नगर और गांधीनगर 2 कॉलोनीज बख्शी साहब ने अपने साथ बनाई थी, एंड ही यूज्ड टू एलोकेट लैंड हिमसेल्फ. तो मुसलमान तब भी नहीं आए. उन्होंने बोला पता नहीं कहाँ, हम तो अपने जन कदल में बैठे हुए हैं, हमको नहीं निकलना है वहां से. So majority of the plots in Jawahar Nagar were given to Hindus because Muslims are very reluctant. But maybe 20% out of 100% would have been. तो डैडी का जब बात है वो तो डैडी को बोलता नहीं मैं आपको 2 प्लॉट दूंगा. बोलते नहीं, यू हैव कम फ्रॉम जर्मनी, वहाँ इतने अच्छे रोज गार्डन होते हैं, यू मेक a rose garden out of it. And Daddy, Oh, to wow. his word, we had 120 types of roses in our Jawaharnagar plot. वो बख्शी का मैं दिखा रहा हूँ उसका दिल कैसा था. डैडी बोलते he didn't have to give it to me. Why would he? सबको एक-एक दे रहा था, मुसलमानों को भी एक-एक दे रहा था. Why would he give to me? I was a very straightforward, honest person. बोलता नहीं कोल साहब आप बाहर से आए हो, इतना काम करते हो, आप 2 ले लो. बात वो शब्द आ गए थे. वो ऐसा ही बंदा था. एंड उसके पास दरबार लगते थे. डैडी बोलते हैं दरबार होते थे कश्मीरी मुसलमानों के, हिंदुओं के. He used to be अपनी कश्मीर में एक चीज है वो आपको भूल गई होगी शायद या आपने देखी होगी. कश्मीर में कभी-कभी ऑफिशियल वर्क लोग गार्डन में करते हैं. Oh, that's right. वो मैंने देखा है. I've seen that. चिनार के नीचे पेड़ के नीचे वो हमारा ऑफिस होता है. उसमें रियली मिस डैडी के जब मैं ऑफिस जाता था वो चिनार के नीचे ही ऑफिस होता था. दैट इज अ वेरी कश्मीरी थिंग. बख्शी साहब का भी वही था. उसकी कुर्सी थी चिनार के नीचे, एंड वो से क्या किसी तो वहीं वो ऑर्डर कभी सिगरेट अपने सिगरेट बॉक्स के पीछे लिख लेता था कि शी शुड बी हेल्प. तो एक बार क्या हुआ था 60-61 बैच में उन्होंने ज्यादा मुसलमान लिए थे और हिंदू कम लिए थे डॉक्टर बनने के लिए, विच लेटर ऑन बिकेम वेरी कम्युनल. बाद में तो 15 सीटें मिलती थी 125 में. तो लोग तो कंप्लेंट करने गए. उनमें से एक कंप्लेंट करने वाली बख्शी साहब की माँ थी. उसने बटन को नहीं दिया, बट डैडी के सामने वो उनकी दौदमाई, उस जमाने में दौदमाई होती थी. स्ट्रेंजर्स टू ब्रेस्ट फीड कश्मीरी बॉयज, मुस्लिम्स और हिंदूज इररिस्पेक्टिव. हर एक जन कदल में एक दौदमाई होती थी. दे टू ब्रेस्ट फीड, पता नहीं क्या सिस्टम था. शी वाज अ दौदमाई टू मेनी वेट नर्सेस. या वो तो अब समझ में नहीं आएगा लोगों को. शी वाज अ दौदमाई टू लॉट ऑफ हिंदूज. तो बोलते हैं मेरा ये तो यतीम हो गया, इसको तो हमने एडमिशन ही नहीं दिया है. So then Sheikh of Kalan, this Bakshi started another batch of 75 people, mostly Hindus, in that medical college. Special batch लगाया गया to admit these people. कोई नहीं करेगा ये. He was such a kind of person. Then things went downhill when he was कामराज plan आया and all that. उसमें उसको निकाला गया. उसने भी हम हस्ती में बोला मैं भी छोड़ दूंगा. He didn't have to. He was the Prime Minister of Kashmir. He was the official Prime Minister. उसने बोला रेस्ट ऑफ इंडिया में जब नेहरू को अपनी लोग अपनी वो दिखा रहे हैं कि वी आर विद यू, एवरीबॉडी रिजाइंड, ऑल द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया रिजाइंड हु वर अंडर कांग्रेस. कामराज का प्लान था. बख्शी साहब ने भी रिजाइन कर लिया. ये तो मुझे तो वापस आना ही है. He didn't come back. Shamsuddin आया, remote control and all that. Long thing short, he did not come back. बाद में मोया मुकद्दस भी हुआ, प्रॉफिट का हेयर चोरी हुआ. It's a big story, another one. And then after that, this guy Sadiq came for a long innings. Till 71, and he was pretty communal. उनकी एक फॉर्मूला थी, it's called 5-10%. 10% देते थे कहीं पे, किसी भी चीज में. टीचर को कहीं डालना है तो 10% केपी होंगे, 90% मुस्लिम होंगे. सुपरसीड करेंगे तो 90% मुस्लिम सुपरसीड करेंगे, 10% हिंदू रहेंगे. It was a blatantly open kind of discrimination. Wow. So then after that was till 71. He died. I remember his death because India had won the East Pakistan Bangladesh war, and he died I think 16-17 दिसंबर को 71 में मरे थे वो चंडीगढ़ में. ऑक्सीजन टेंट उस जमाने में बोलते थे, PGI चंडीगढ़ में कहीं पर. तो after that came Mir Qasim, who was a power minister in the 50s under Bakshi Saab. He was known to Daddy, but वो 3-4 साल रहे और and he gave way to Sheikh Abdullah. Sheikh Abdullah was removed from the jail. Indira Gandhi had an accord with Sheikh, and Mir Qasim Saab resigned to give Sheikh Saab the chief ministership. So Qasim Saab he was okay. He was not very communal, as I said, to respect a lot of Kashmiri Hindus and all that. But Sheikh was blatantly communal. Sheikh was पहले से ही उसने जमीनें जब्त करी थी कश्मीरी की 50s में. So, leopards don't change their spots. So he was saying,
Yeah. He knew daddy mummy को जानता था वो, because you know these people, you know. He knew, but हमारे से उसके कुछ नहीं थी. But you are asking me a question कि कैसा माहौल था. I cannot be saying that मेरा माहौल तो अच्छा था, मैं तो बचपन में कार में पैदा हुआ था, सिल्वर स्पून था. That is not the right picture. I have to give you the picture of the society as such. Yes. So there was blatant communalism. जो ये लोग बोलते 1990 में कुछ हुआ, वैसा नहीं था. ये communalism वहाँ पे शुरू शेख नहीं किया था. Then he was imprisoned. Then Bakshi Saab gave a respite to Kashmiri Hindus, and many Kashmiri Hindus stayed back. Sadiq Saab started, he was a leftist. Sadiq Saab वो क्या था, अपने बख्शी साहब और टीपी दर साहब की पोट्री हुआ करती थी 2015. वो कम्युनिस्ट लीनिएज के थे, और जो कबीर बेदी के डैडी थे, बेदी, he had written the constitution of Naya Kashmir. So they were all interconnected. And उसकी वाइफ जो थी कबीर की मदर, वो इंग्लिश लेडी, she was वुमेन कॉलेज में टीचर थी या प्रिंसिपल थी उस जमाने 40s 50s में. So they gave the constitution, और रेड रशिया का पूरा उन्होंने constitution, उन्होंने नया कश्मीर को डाला, कट एंड पेस्ट किया था almost. So that was Sadiq was from that background. He was very close to Russians, KGB and all that, leftist PTI, वो उस background का. जिसको आजकल आप he knows मैं कहता हूँ या जो term use करता हूँ, तो he had all these people around, Hindus in name only, leftist, मुसलमान leftist, जो बाद में उन्होंने JNU बनाया, बाकी लोगों ने उसी कोटरी का था वो. So though he was leftist, but to survive he had to be communal. You cannot survive Kashmir without being communal. That was the rule. Bakshi was an exception. Rest were following a kind of communal agenda, which even you know, everybody was following. So ऐसे माहौल में, if you ask me, Kashmiri Hindus, were they discriminated upon? Definitely. As I said, during Sadiq time और मीर कासिम टाइम, अगर 120 सीटें हैं मेडिकल की, उसमें से 5 या 10 सीटें कश्मीरी पंडित्स को मिलती थी, even if they had all the merit. कश्मीर 3rd division 2nd division वालों को भी मिल जाती थी. Majority of the 2nd divisioners maybe in America right now. और इंजीनियरिंग कॉलेज में भी वही माहौल था. 200 सीटें कुछ होती थी, 5-10 या 15-20 होती थी कश्मीरी हिंदूज को, और बाकी were all distributed among these Muslims, पीरज़ादास हो या जो भी हो, उनमें होती थी. So that is how closely I know the society. And also मेरी मम्मी थी, वो कश्मीर यूनिवर्सिटी में हिंदी डिपार्टमेंट में थी. तो मैंने, she was another open lady. I used to go and to her department sometimes. जो कभी उनकी कैंटीन में समोसे खाता था as a kid. So I found her students very intelligent. वो कोई कविता लिखता था, इवन जो ये अग्नि शेखर was one of her students. तो ये सब बड़े इंटेलिजेंट होते थे. हमारे घर भी आते थे. मम्मी ने ओपन डोर पॉलिसी, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो they used to come to जवाहर नगर and you know talk to her. She had a very open door policy. तो मैंने मम्मी को एक दिन पूछा, ये तो इतनी इंटेलिजेंट है, मैं तो इनके सामने बेवकूफ लगता हूँ. तो वो बोलती नहीं, these are the people who have not been selected in the professional colleges, engineering and doctors, so they have मजबूरी से हिंदी डिपार्टमेंट आए हैं ना, we have to take them, there is no respite for them. And वो कंप्लीट करने के बाद आजकल वो all over the world हिंदी स्टूडेंट्स, अग्नि शेखर का तो पता ही है, बाकी भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं. So it was the kind of माहौल I grew in. So, sir, let's fast forward a little bit. Let's come to late 80s and coming towards 1990. What was going on around you? Tell us a little bit about your observations. Where were you? What were you doing? आपके आसपास आपने क्या देखा और क्या हो रहा था? और back home कश्मीर श्रीनगर में आपने क्या देखा, क्या हो रहा? जब तक शेख अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर थे, though he was criminal, he had kept the Pakistani forces at bay. Forces means, the section of society who were very pro-Pakistani, उनको bay में रखा था. I think 81-82 में जब मरे फारूक अब्दुल्ला, I will just tell you small political, then I will go back, I'll jump back. उसके बाद फारूक अब्दुल्ला साहब आए थे कुछ दिन के लिए. उसके बाद उनका जो ब्रदर इन लॉ है, वो का नाम भूल गया मैं, आएगा गुल समथिंग, गुल्लू आया था, वो भी 1-2 साल के लिए था. Gulsha, yes, exactly. He was brother-in-law of Farooq Abdullah and son-in-law of Sheikh.
उसके बाद there was complete paralysis, and then जगमोहन का first inning शुरू हुई थी as governor when he was praised to the skies by Kashmiri Muslims. तो ये दौर था, and जगमोहन का खत्म होते ही फिर फारूक अब्दुल्ला वापस आए थे. This was the decade. But during Sheikh Saab मरे 81-82 में, the माहौल became very pro-Pakistani. उसमें एक बारी क्या हुआ था कि इंदिरा गांधी wanted to fight an election against Farooq, the National Congress. You would have heard that, you would have read it even in Rahul Pandita's book that उसकी एक रैली थी, वहां पे बदतमीजी से लोगों ने they had removed their clothes in front of her. And she was protected by the CRP, but बाल बन गई थी. Everybody disrobed in front of her, hundreds and thousands. So ये हुआ था. So this was a माहौल very anti-India, very anti-India. There meant anti-Hindu because वो इंडिया पे बदला नहीं ले पाते थे, तो हम पे हमारे घरों पे पथराव करते थे. कोई भी बहाना लेके, कोई पाकिस्तान जीते या हारे क्रिकेट में, हमारे घर पे पथराव होता था. That was a thing. And उन दिनों क्या हुआ था, एक पिक्चर आई थी, उसका शेख मुख्तार उसमें था, एक लिबियन शेख अब्दुल्ला टाइप कैरेक्टर. तो उसने काफी कुर्बानियां दी थी लीबिया में अगेंस्ट इटालियन फोर्सेस एंड हाउ ही fought them. ये DVD, this video was circulated in almost every Kashmiri Muslim family. So they were saying, look, they were comparing, look how much sacrifice he has done against Italy. वो हमारा शेख अब्दुल्ला तो ने कुछ नहीं किया. Then at one point the point came that शेख अब्दुल्ला की grave बचानी पड़ी because people used to wanted to give and dig it up. They were so angry. So much brainwashing was taking place against their own Sheikh Abdullah because they perceived it to be pro-Hindu, pro-India. Pro-India, right. उस माहौल में क्या हुआ? उस माहौल में बहुत कुछ गड़बड़ हुआ. Lot of Jamaati Islami people were inducted into Kashmir police. फिर वो काजी निज़ार आ गया अनंतनाग का, another figure. So lot of Islamization took place in 80s, whether it be police forces, whether it be in jobs, whether it be in masjids. A lot of these जो ये देवबंद के लोग आने लगे, छोटे पजामे वाले, Kashmiri imams were in the background. So all these masjids were taken by these imams from Deoband. So massive Islamization took place. Basically, kafirophobia. I call it kafirophobia. That's a good term for it. Kafirophobia was at its peak. So you could see in their eyes that they do not want us to be here. You can see that blood boil hota tha. दुकानदार के पास जाओ या मीट वाले के पास जाओ या सब्जी वाले के पास जाओ या किसी ऑफिस में जाओ, they would have an eye contact with you. That had started already. Then during governor's time, he did a lot of good things. Because there was also a lot of corruption. So governor's time में corruption कम होता है because the chain of commands बहुत कम होती है. कलेक्टर कमिश्नर होता है और काफी कुछ chains of commands are very small. So the corruption goes down in every governor rule in anywhere in India. So he knew that लोगों के पास सड़कें अच्छी नहीं है, so he made autobahn type of roads in Kashmir which still exist. Maulana Azad जो है roads and आगे पीछे उस area में, they're all made by Jagmohan, and he was called Sipe Salar. हमारा दूसरा पैगंबर आया हुआ है, औरतों के उसमें डाल देते थे, वन में डाल देते थे, सोन महाराजा और ये वो गर्जी आ गया. And all that things were happening during Jagmohan's first inning. Then things were deteriorating. We knew that it will not be the same. And जब ये काजी निज़ार जैसे लोग आने लगे communal, and they were targeting Hindus and snatching their dejhor and all that, these things were happening. And 88-89 maybe they knew something was coming up, and they were not telling us. But हमारे कुछ मुस्लिम फ्रेंड्स थे, they were telling daddy, आप संभाल के रहो, ये कश्मीरी हिंदू काफी नटीपुर और बाकी जगहों में मकान बना रहे हैं, पता नहीं, I don't know if they are being properly advised or not. हम नहीं बना रहे थे, हमको मकान क्या, हमारा तो 60s में बना हुआ था. डैडी क्या कुछ तो हो रहा है.
तो फिर then it came to 89 and then daddies के काफी हमारे काफी मुस्लिम friends even in every strata of society थे, even कांदर टाइप जो होते हैं ये सब्जी बेचने वाले जिनको डैडी ने बाद में किसी के बेटे को नौकरी दिलवाई थी, तो they were all beholden to daddy that is a nice man. उसको बोलने डैडी को बोलने आते थे कि कोल साहब आप थोड़ा सा एतराज रखें, फिर जो ही वो रूबिया सैयद का किडनैपिंग हुआ तो एक आदमी डैडी को, हमारा एक बचपन का एक डैडी का एम्प्लॉय किया हुआ था मोहिउद्दीन, वो डैडी के घर आया, डैडी बोलते भैया आप हिट लिस्ट पे हो, एंड डैडी वाज शेकन शेकन, तो ही वेंट टू दिस हबीबुल्लाह, आई थिंक द गाय हु वाज इन, बाद में चीफ सेक्रेटरी था, ही बिकेम इंडिया का जो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन का सेक्रेटरी भी बने थे हबीबुल्लाह साहब, उनको मिले, तो डैडी ही वाज प्रीटी ओके, ही वाज प्रीटी डिसेंट चैप, और आईएएस कैडर के थे, तो उन्होंने डैडी को बोला थिंग्स आर वेरी डिफिकल्ट कोल साहब, व्हाई डोंट यू गो टू जम्मू फॉर, डैडी ने बोला मैं जम्मू क्यों जाऊंगा, तो बोलता नहीं कुछ हालात खराब हो सकते हैं, चलेंगे इन जनवरी और समथिंग लाइक दैट, तो डैडी ने बोला कि यार कितने खराब हो सकते हैं, तो जो ही रूबिया सैयद को छोड़ दिया तो कश्मीरी जो ये टेररिस्ट टाइप लोग हैं उन्होंने समझा आजादी मिल गई, आजादी इज द कॉर्नर, so they were on streets and demonstrating. AK-47 was the every mohalla, and who would they demonstrate against? They didn't have Indians in front of them. Kashmiri Indians ही थे, हिंदूज थे, उनको सताते थे, बटनों को तंग करते थे, गालियां मारते थे, ये है वो है, easy target, right? Yeah, as just Pakistan, बटनों सान बटो वगैरह शुरू हो गया था जनवरी बिगनिंग में. It culminated in 18 January because 19 January because 18 January को all parliamentary people in parliament decided that Jagmohan has already done a stint of governorship in Kashmir. It would be a good idea that we will send Jagmohan back. जो ही वो news आई तो via Pakistan और via this mosque circuit से people came out on streets. वो 18th को आया था, वो 18th को 19th को fly नहीं कर पाया, जम्मू गया था because दरबार मुंह होता है तो गवर्नर हाउस इज इन जम्मू, not in Kashmir. So लोग सड़कों पे उतरे, whom will they target? They won't target anyone else. The nearest target is Kashmiri Hindus. So we bore the brunt of their, वो आपने फिर कहानियां सुनी होंगी, कश्मीरी लड़कियां बहुत, मैं यहाँ भी मिली मुझे इंग्लैंड में, ऊपर गई थी अपने ब्रायरकनी में विद जोन केरोसिन, आदू ने फिनाइल रखी थी मरने के लिए, they were taking all the precautions to die before they would come into the hands of these jihadis. तो दैट वो वाला माहौल था. और उसके बाद और भी माहौल खराब हुआ. HMT के जो इंचार्ज थे उनको मारा गया, कश्मीर के वाइस चांसलर थे उनको मारा गया, जो अपने लसा कोल थे कश्मीर रेडियो के, ऑल इंडिया रेडियो कश्मीर रेडियो जिसको बोला जाता था, ही वाज assassinated in February. So end of February daddy left. Daddy told वजाहत हबीबुल्लाह the chief secretary that मैं जा रहा हूँ आपकी एडवाइस पे. And one thing I want to tell you is that उन दिनों वहाँ वेद मरवा रहता था, एक another गवर्नर का एडवाइजर who later on became governor to North East for a long stint. एक मीटिंग चलती थी, डैडी ने उसको बोला कि Kashmiri Hindus are being bearing the brunt of all these things in January. He got very angry. He goes, I got nothing to do with these Kashmiri Hindus. I have come here to look after Kashmir, not these Kashmiri Hindus. On record, he said in a meeting. Daddy was very angry. Daddy was, what kind of advisor are you to the government? Right. Daddy wouldn't take things back. He was not like he's not a docile kind of person. He gave it back to him. And Wajahat Habibullah had to intervene and all that. And Wajahat Habibullah remembered it because 2012 में मैं कश्मीर गया था. First and last time after thing, वहाँ पे हमारे स्कूल मेलनसन स्कूल का 100 years था, तो उस जगह पे वो वजाहत हबीबुल्लाह को भी उन्होंने बुलाया था, तो ही रिकॉग्नाइज होता रहा तुम तो कोल साहब के बेटे हो. How is the angry man? Angry है वो, तो वो मतलब इतना डैडी का उनको डर था कि मुंह पे बोल देते हैं. And after so many years, he remembered my father. Right. Oh, that's very interesting. Yeah. I do. Was very close to Rajiv Gandhi also. I think for a small stint he was an ambassador in US also, if I'm not mistaken. Oh, okay. देख लेना Google में वजाहत हबीबुल्लाह. Yeah, I will. Very
well-read Yeah. person, very highly regarded by Indian administration. Nice chap. Wow. But Interesting. Yeah. these are my But- tasurat. Right. Bilkul, They bilkul. may And be more because I don't practice. They come from my memory. So sure, absolutely, absolutely. Now, what I do want to ask you, sir, is wo tension bhara mahal tha. It was a really bad time. All of our Kashmiri Pandit brothers and sisters know that or have personally gone through that. वो तो बहुत ही खराब वक्त था ही था. आप मुझे बताइए, when we talked पहले about education and the importance of education to the Kashmiri Pandit community. Tell us a little bit about, and I know that a lot of people do know, but some people might not know what your and your family's contribution towards the education of the new Kashmiri generation is. Tell us a little bit of that story about you and Bharat. Yeah. I call them Thakre kids. They are the Thakre kids. Nice. उसके लिए एक अलग प्रोग्राम भी कर सकते हैं, लेकिन I can tell you briefly क्या हुआ था. December 92 में बॉम्बे में राइट्स हुए थे after the Babri Masjid. We were in Bombay because after coming out of Kashmir, I had found a job in Baba Atomic Research Center के hospital में. I had got a job there after an interview. So luckily, we had a flat in Andheri near this Juhu. तो उन दिनों पता नहीं मेरे ब्रदर ने कोई चिट्ठी लिखी थी टाइम्स ऑफ इंडिया को क्रिटिसाइजिंग शहबाना आजमी क्यों ये मुसलमानों के लिए कर रही है, व्हाई इज शी नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट द हिंदूज. तो उसने उस लेटर को उस जमाने में लेटर लिख के यू हैव टू राइट द फुल एड्रेस एंड ऑल दैट. उसने मेरे ब्रदर ने टेलीफोन नंबर भी डाल दिया था उस लेटर पे. शी हैड गॉट होल्ड ऑफ. वो इतनी तेज है इन मामले में जी. दैट टेल्स यू नो कितने जफाकश होते हैं ये लोग. व्हाट कैन दे डू फॉर देयर कौम. She tracked that letter and phoned our house. So Shabana Azmi called your house? Yes. She called my house and मैंने बात करी तो बोलती नहीं मैं शबाना आजमी बोल रही हूँ, मुझे अमित कोल से बात करनी है. तो मैंने बोला अमित कोल यहाँ नहीं है. तो डैडी ने मुझे पूछा कौन है ये. मैं शबाना आजमी. डैडी बोला कैन आई टॉक टू हर. तो उसने शहबाना आजमी ने डैडी को बोला कि आपके बेटे ने ऐसी गुस्ताखी करी है कि मेरे बारे में ऐसा लिखा है विच इज नॉट ट्रू. तो डैडी ने उनको, शी डिडंट नो व्हाट माय फादर वाज, उन्होंने बोला कोई ऐसे ही बच्चा होगा. तो डैडी ने उनको बोला कि व्हाट यू आर डूइंग फॉर मुस्लिम कम्युनिटी इन बॉम्बे इज एडमायरेबल. It should be done by everyone. It should not be your cause. Everybody should, anybody in weak circumstances should be helped, whether it be irrespective of our religion. That is what our Indian constitution is. And डैडी ने बोला आपने सुना होगा कश्मीर के बारे में, बहुत कुछ हुआ वहां पे, कश्मीरी हिंदूज के साथ ये. बोला हाँ सुना है. बोला आपने क्या किया. तो she could not answer it. तो उसने बोला कि आप कोल साहब कैन यू कम टू माई हाउस, कैन वी डिस्कस इट फर्दर ऑन. Because she felt she had done nothing. She's a champion of these minorities. Daddy ने बोला हम भी minority थे कश्मीर में. So is it only that you are helping Muslims and you're not helping Hindus in distress? तो बोला आप हमारे घर आ जाइए प्लीज, जुहू में है, ये मेरा एड्रेस है, आप मेरे घर आ जाइए. Bring Amit or whosoever wants to come. तो डैडी ने बोला मैं चलो जाएंगे. इसके बाद मैंने बोला क्या करना है देखा. मैं ऐसा आई वोंट एवर गो. डैडी पहली बार मेरे डैडी का नहीं माना, मुझे नहीं जाना. तो मम्मी ने बोला गसा क्या चुका है. तो मम्मी डैडी गए. दे स्पेंड बहुत देर, 3-4 घंटे लगे उनको वहां पे. तो उसने बोला कि डैडी बोलते हैं वही शी वाज नॉट कोहेरेंट. ही वाज यतिखोर ओसवाना, यहाँ का उधर का बोलिए. यतिखोर है कश्मीरी पंडित बोलते हैं. यतिखोर मतलब यू डोंट टॉक सेंस, यू यतिखोर ओसवाना. बट बोलते हैं उसने 1-2 चीजें बोली. एक तो बोला कि मैं आई विल डोनेट टू कश्मीर. डैडी ने बोला, उसने डैडी को बोला किसको डोनेट करूं. डैडी ने बोला कश्मीरी समिति है हमारा, वो पेपर निकलता है दिल्ली ऑफिस पेपर्स, उनको आप दे दीजिए. तो later on we came to know she had donated 5,000 rupees to them. और then she said कि डैडी को डैडी मम्मी को बोला कि आप बाला साहब ठाकरे से मिलिए, वो हेल्प करेंगे. डैडी ने बोला बाला साहब ठाकरे तो इज ए हिंदू, इज ए कटर, आप लोग तो उसके अगेंस्ट ही बोलते रहते हो. और बोलता नो बाला साहब की जब भी मुझे प्रॉब्लम होती है किसी बस्ती में या कोई रेगुलराइजेशन करनी होती है किसी झुंबर पट्टी का, तो आई ऑलवेज
go to Bala Sahib, he always helps me. तो वो चीज डैडी ने, मम्मी ने मुझे बोला कि ऐसा कह रही थी, तो मैंने उनको बोला कि, मम्मी ने बोला नहीं, मैंने बोला कि क्या करना है पॉलिटिशियन को मिलने, दीज आर ऑल दे डोंट हेल्प। तो मम्मी ने बोला इसके आगे मतलब लेट अस मीट, नहीं होगा तो नहीं होगा, नहीं होगा तो होगा। तो हमने नीचे हमारे घर के पास ही शाखा थी, शाखा जैसे एक छोटा सा एक पत्थर का बनाते थे, वहाँ पे फील्ड ऑफिस टाइप ऑलमोस्ट लाइक अ लिटिल फ्लैट होता था, वहाँ पे शिव सैनिक नाचते आगे पीछे होते। तो अपने लोकलवाला वाले को पूछा, यार ये बाला साहब कहाँ रहते हैं? तो उन्होंने बोला कला मंदिर में रहते हैं, वो ईस्ट बैंड्रा है। तो वहाँ सबको पता है, आप उतर जाइए, वहाँ ट्रेन के उस साइड पे उतरना बैंड्रा के, वहाँ से यू विल कम टू नो वेयर ही लिव्स। तो हम गए, मैं, डैडी और मम्मी, हाँ ब्रदर नहीं गए, ब्रदर ने बोला नहीं यार कि कौन जाता है इनके पास, तो ये कुछ नहीं करते हैं। तो गए तो वहाँ पे पहले ही उन्होंने रोक लिया, उनका एक सड़क है कला मंदिर जहाँ शुरू होता है, गेटेड कम्युनिटी है, वहाँ पे पुलिस वालों, बॉम्बे पुलिस वालों ने रोक लिया। बोला, मैं बोला आपको बाला साहब से मिलना है। बोला आपके पास कोई हैव यू गॉट एन अपॉइंटमेंट? बोलता नहीं, हमने बोला शाबाना आजमी ने हमको भेजा है। बोला अपना नाम लिख दीजिए, कागज पे नाम लिख दिया मम्मी ने कि शाबाना आजमी हैज सेंड अस टू यू। तो वो एक बंदा मे बी अबाउट 50-60 यार्ड्स में उनका मकान था, 50 यार्ड पे चला गया, तो वहां पे उसने वो कागज दे दिया। एंड विद इन 10 मिनट्स केम दैट या आई वुड लाइक टू सी देम। तो हम गए तो वो कमरा छोटा था, मतलब एक छोटा सा कमरा था, उसमें सोफा, एक सोफा इधर था, एक सोफा इधर था, और आगे एक खाली सीट थी और भगवान के फोटो थे, और सीट के सामने दरवाजा था। तो वी सैट फॉर मे बी 5-6 मिनट्स, और वहाँ पे एक बोरा फैमिली थी साथ में, जो बोले बोरा होते। तो आए वो, तो बोला रे आई हर्ड अबाउट कश्मीरी, यू हैव कम, कश्मीरी पंडित का मेरे को काफी, आई हैव लॉट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर कश्मीरी पंडित। तो पूछा मम्मी से आप क्या करती थी पहले, अब कहाँ हैं? मम्मी हैड बिकम इग्नोर, इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी में उनको कंपनसेट किया था। मेनी कश्मीरीज टीचर्स वेर कंपनसेटेड इन दिल्ली, जिसको एडॉक बोलते हैं। जब वो अभी वो केजरीवाल का गड़बड़ हुआ था ना, एडॉक मैंने किया, परमानेंट मैंने किया, उन सबको एक टेम्पररी जॉब्स दिए गए थे, किसी को डिपेंडिंग ऑन देयर व्हाट दे वर इन कश्मीर, जो यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी टाइप में डाला था, टीचर जो थे उनको टीचर्स में रखा था। तो बोला वो करते हैं। और डैडी ने बोला नहीं, आई रिटायर्ड नाउ। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं तो काफी कुछ करता हूँ कश्मीरी हिंदूज के लिए। मैं क्या होता है, साइन इज अ प्लेस इन बॉम्बे विच इज वेरी क्लोज टू कला मंदिर जहाँ वो रहते थे। साइन इज फुल ऑफ ट्रकर्स, वहाँ ट्रकर्स हेडक्वार्टर है वहाँ। सरदार, बिकॉज दे डू लॉट ऑफ ट्रकिंग में इनकी काफी एक्सपीरियंस है, तो साइन के कोलीवुडा के सरदार फेमस है, वहाँ के दावा भी फेमस है। बॉम्बे में इफ यू वांट टू हैव अ गुड पंजाबी मील और तंदूरी चिकन, यू हैव टू गो टू साइन कोलीवाड़ा। वहाँ पे यू विल बी गारंटीड ए ग्रेट तंदूरी चिकन और झींगा फ्राई और झींगा तंदूरी। मैं जाता था वहाँ पे बिफोर बाला साहिब, तो आई यूज्ड टू गो देयर टू ईट गुड फूड। तो बोला वहाँ पे जो ये ट्रकर्स आते हैं, दे वो वहाँ से गेहूं लाते हैं, अनाज लाते हैं, तो दे गो बैक खाली, दे गो बैक ट्रक्स वापस जाती हैं, राइट। तो मैंने आइडिया मुझे आया, तो मैंने उनके बॉस को बुलाया एक दिन, किसी सिंह को बोला, यार तुम वापस तो जाते हो, कैन यू डू मी अ फेवर? आई हैव दिस लॉट ऑफ दीज ब्लैंकेट्स, प्रोविजंस, चन्ना, सो डोनेशंस वगैरह जो भी भेजनी है, तो वो है, तो आप हेल्प करोगे? बोलते क्यों नहीं करोगे? सरदारों का तो एटीट्यूड होता है ना, सरदारों को तो अभी हैव गॉट अ बैड लेवल, पाकिस्तानी है, सेवा तो बहुत बड़ी बात है। वो तो हर लोग हाँ बोलते हैं, दे वोंट से नो, दे विल हाँ जी कर देंगे जी, दे हैव अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड हो गया। तो बोलते हैं प्लस उनकी रिलीजन में भी सेवा इतना है कि सेवा है ना, सेवा इज अ पार्ट ऑफ देयर रिलीजन, सो दे ऑलवेज, दे आर डिफरेंट देन अस, दे ऑलवेज से यस, दे ऑलवेज सी द ब्राइट थिंग्स ऑफ यू नो, दे सी जो भी करना है गुरु जी के लिए करना है, तो दे वाहे गुरु के लिए करना है, तो वाहे गुरु के लिए वो not only that, they used to make an additional trip from Jalandhar to the camps, जो हमारे जो कैंप्स है नगरोटा में थे, 2-3 जगह डॉटेड से, इवन उधमपुर में पहले हमारे रिफ्यूजी कैंप्स थे। They used to make an extra trip for Bala Sahib, right from Jalandhar, they used to go पठानकोट से लेके वो जाते थे वहाँ पे, तो खुश थे, they very good humor, as you said, they want to do seva is in their bones। तो डैडी को आइडिया, डैडी ने बोला देखो बाला साहब आप ये कर रहे हैं, मैं मानता हूँ बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वी कश्मीरी पंडित्स, हमारा बैकबोन ऑफ अवर डीएनए इज एजुकेशन। जब तक हम एजुकेशन नहीं हासिल कर पाएंगे तब तक हम कहीं नहीं रहेंगे।
बोलता अभी भी देखो, आई थिंक वहाँ पे उन दिनों खुराना साहब थे चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, ही हैड गिवन लॉट ऑफ पटरीज, फुटपाथ और वो शॉप्स दिए थे। इवन काम करता था बाद में एम्स के बाहर भी छोटे छोटे शॉप से। डैडी ने बोला हम दुकानदार नहीं है, हमसे दुकानदारी नहीं हो सकती है। लाजपत नगर दिए थे, लाजपत नगर, आईएनए मार्केट, सब छोटे छोटे खोखे लाइन से लगे होते थे। और एम्स के बाहर, दैट आई नो बिकॉज मैं एम्स के सामने आईएनए के यूसुफ सराय के पास होते थे, वहां से मैं बात भी करता था बिकॉज आई टू वर्क देयर लेटर ऑन, आई टू टॉक टू। तो डैडी ने बोला हम दुकानदार कौम नहीं है, हमसे दुकानदारी नहीं होगी, वी आर। डैडी ने बोला कि जब मैं छोटा था, मेरी जो मासीज थी, इवन दे वर PhDs फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी, बिकॉज डैडी की जो मातामाल थे वो गंजूस थे, दे वर द लार्जेस्ट कारपेट मैन्युफैक्चरर्स इन एशिया, दे वर ह्यूज, एवरीबॉडी नोज गंजूस कारपेट्स उस जमाने में, दे वर द एंड दे आर सो बिग हैंडलूम्स। जब इंडिपेंडेंस हुई, जो अपना राष्ट्रपति भवन है, they had a global tender for the carpets. Nobody could make the carpets except these Ganjus because they had so many handlooms. So Ganju handlooms carpets were all over राष्ट्रपति भवन. So they were very rich. तो उनकी भी मासियां PhD करी हुई थी, डैडी की, वो talking about 1910, 1920s. तो बाला साहब बोलता है ये तो अच्छा आइडिया है. He was very quick. बाला साहब का एक था वो, he was quick on the uptake, very quick. I have seen very few. Vivek Agnihotri is like him, very quick on. Rishi Sunak is like him, very quick on the uptake. Very few are. Mostly tube lights होते हैं ये. You know, these three personalities have come. They are very quick on the uptake. तो उसने बोला नहीं ये तो बहुत आसान है। डैडी बोला कैसे आसान? बोलता हमारा है ना मनोहर जोशी, he was not the chief minister. He used to run an academy called कोहिनूर Academy, पढ़ते थे, चलाते थे। Right. उनका भी एजुकेशन का बैकग्राउंड था, right? तो उनकी काफी कोहिनूर टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग कॉलेज, मैनेजमेंट, सब कुछ था। तो उसने बोला कि यार ये तो बहुत आसान काम है, मेरा जो हनुमान है वैसे, he was a very jokey kind of person, very humorous. बाला साहब had a very good sense of humor. वो डैडी का भी है, मेरा भी है, तो हम ऐसे मस्ती कर रहे थे। तो बोलता नहीं, हम बाला साहब को मेरा हनुमान कर देगा आपका काम। तो मैं बोला डैडी ने वही तब देखा, पता नहीं क्या चो बना। डैडी को एक कश्मीरी आंखें होती है, मैंने आटा चीजें ये बेवकूफ बना हुआ डैडी ने भी देखा। मैंने बोला नहीं, इसने फोन उठाया अपना, बोला लगाया मनोहर जोशी को, वो कोई उसको मराठी में बात करी, ये कश्मीरी पंडित आए हुए हैं, मैं इनको आपके पास भेजूंगा। He was a very quick man, वो सर्जरी का उसी वक्त करना है, there is no delay. Next day did not exist for बाला साहेब, which is very surgical, military operation, अभी मिलना है, अभी करना है। तो उसने बोला मैं इनको भेज रहा हूँ आपके पास। तो उसने बोला हाँ भेजो। तो उसने बोला लुक, मैंने टॉक टू मनोहर जोशी सर, हम सर बोलते हैं हमारी शिवसेना में, he will do your thing, उसको मालूम है कि कैसे करना है, what are the ways to do it, but before you go I have to do something for you. तो हमने बोला क्या करेगा, अब कुछ पैसा तो नहीं मांगेगा। तो नहीं, फोन उठाया उसने, इंटरकॉम, अपनी बीबी को नीचे बुलाया कि मैं वो कश्मीरी ब्राह्मण आए हैं, इनकी आरती करनी है। तो वो आई 5 मिनट में, उसने बड़ी थाली लाई, उसमें दिए थे, पेड़े थे, तो उसने हम सबकी आरती करी, मेरी मम्मी और डैडी की। तो लाई, वो बैठी और बड़ी वो शॉर्ट स्टेचर और बड़ी अच्छे दिल की थी, बड़ी मतलब लाइक ए मर्ज, लाइक ए मदर, शी वाज वेरी नाइस। तो मातुश्री, तो उसने ये किया, तो उसके बाद चली, बोलता नाउ आई एम हैप्पी दैट, तो टीका वीका लगाया उसने, बोलता नाउ आई एम, बाला साहब ने बोला नाउ आई एम हैप्पी। तो मुझे पूछता है, डैडी को क्या पूछता, मुझे बोलता मुझे क्या रिश्वत दोगे तुम? मैंने बोला कि मेरी मम्मी यखनी अच्छी बनाती है, तो वो दूंगा मैं, वो लाऊंगा टिफिन कैरियर में, तो फॉरवर्ड करूंगा। तो मैंने ली वो यखनी, उनको बड़ी अच्छी लगी, और आफ्टर 2-3 वीक्स, और बाद में उन्होंने शाम को फोन किया कि मुझे ये यखनी इतनी अच्छी लगी, इसलिए मुझे बताओ इसमें नट्स तो नहीं थे, बिकॉज आई एम नॉट एलर्जिक। अगर मैं बोला सर अभी अब तो अगर नट्स का एलर्जी होनी थी, अभी तो आप मेरे से बात नहीं करते, आपको मतलब हो गया होता तो मुझे मार रहे हो क्या? तो he used to phone me for many times, मेरे एग्जाम में मुझे best wishes देते थे। He was a very down to earth man. Thanks. For somebody at that stature, to have such attention to detail, it's just amazing. Yeah. He used to phone me and wish me, बाद में भी क्या हुआ, मैं बाद में कभी और बताऊंगा, या अभी टाइम होगा अभी बोल देंगे। तो फिर क्या हुआ, फिर मनोहर जोशी के पास हम गए, तो उनके ऑफिस में गए, कोहिनूर दादर में शायद, आई रिमेम्बर, बिकॉज आई मेट हिम आफ्टर few years back to
thank him also in Dadar. तो दादर में वहां गए तो उसने मुझे बोला कि आपको मेरे मैं तो उनका हनुमान हूँ। उसका एक डायलॉग है बड़ा, वो मैं भी यूज करता हूँ हर वक्त, बिकॉज आई एम ऑल्सो ऑफ द सेम नेचर। मैं लोगों को बोलता हूँ कि मेरा मन है हेल्प करने का, आगे क्या होगा उस हेल्प का ये ऊपर वाला या वो आदमी ही जानता है जिसको मैं बोल रहा हूँ हेल्प करने को। बोलता मेरे मन से तो 100% होगा, आई विल गिव माई 100% और इवन 200%, बट आगे क्या होगा आई कैन नॉट प्रॉमिस। तो विद इन 1 week ही हैड मेड अ डॉक्यूमेंट, रेडी रखा था डॉक्यूमेंट, और उसमें एक ही अपोजिशन आई। उसका जो IAS ऑफिसर वहां था एजुकेशन का, एज यूजुअल दे आर ऑलवेज IAS इन इंडिया स्टैंड्स फॉर आई एम सॉरी, they basically meant to say it cannot be done. Correct. That's what my father calls IAS, means I am sorry, they don't want to do anything. तो उसने जो मेडिकल पार्ट था इसका सीटों का, उसमें रोक लगाई, बोला कि आई नीड IMA's अप्रूवल एंड ऑल दैट, IMC's अप्रूवल। तो बाकियों का ही एग्रीड इन टोटो। तो डैडी को बुलाया, फिर हम भी गए बाला साहब के पास थैंक यू करने, मिठाई का डब्बा ये वो। तो बोलता देखो 900 से 1000 सीटें मिलेंगी। डैडी ने बोला यार हमको तो 10 सीटें भी नहीं मिलती थी। 10 से तो बेटर है 1000। बेटर है। तो कश्मीरी, अब मैं I should not say this on live, but no, Kashmiri Pandits who had migrated even in 40s also became eligible somehow, कुछ कर लिया उन्होंने। कश्मीरी समिति ने बोला ठीक है यार 900 सीटें 700 ही जा रही हैं, 200 सीटें क्यों वेस्ट करनी है, वेस्ट क्यों करें, हेल्प हो जाए। तो अभी मैं विवेक तनखा से मिला था, जो अपने राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जिन्होंने वो कश्मीरी बिल लगाई थी अबाउट कश्मीरी रीसेटलमेंट। आई मेट हिम फॉर, उन्होंने बोला यार विवेक जो आप लोगों ने बनाया था वो डॉक्यूमेंट जनवरी 1993 का, वो ही मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने दिसंबर 1993 में कॉपी कर दिया और उसमें मेडिकल सीटें भी डाल दी। वो तो सेम डॉक्यूमेंट थी। आई वांटेड टू आस्क हिम, बोलता है विवेक जो आप लोगों ने वहां किया था वो हमने बाला साहब का ही वो डॉक्यूमेंट मध्य प्रदेश में कॉपी किया, एंड इट बिकेम अ रूल इन मध्य प्रदेश, कश्मीरी हिंदूज हैव टू बी गिवन प्रायोरिटी। वो भी चलती है, दैट रिजर्वेशन स्टिल एग्जिस्ट इन मध्य प्रदेश। फिर क्या हुआ, फिर फीडबैक, स्मॉल फीडबैक, 2-3 साल के बाद हम डैडी मिलने गए बाला साहब को। फिर बाला साहब बड़ा खुश था, यार बोलता मैं, डैडी बोलते हैं आप तो इतने बड़े खुश है, बोलता मैं सुबह बियर पी रहा था, आज आप आए नहीं, बियर पिलाता। ही वाज वेरी ऑनेस्ट, वो सीधा बोलता था, ही हैड नो दिस, उनके पास कोई स्पीड ब्रेकर नहीं था, जो उनके मन में बात होती थी वही जबान पे होती थी। वो वाज नॉट बिलीविंग इन वर्च्यू सिग्नलिंग जो हम करते रहते हैं सुबह शाम। तो डैडी ने बोला क्यों कुछ, बोलते यार फीडबैक जबरदस्त है। बोलता है जो आपके लड़के MBA कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बोलते हैं फीडबैक, बोलते इंटरव्यूज में दे आर गोइंग ऑफ द स्कोर। बोलते हैं वहां के लोग बोलते हैं कि यार ये बंदे कहाँ से हैं, बोलते हैं नोबडी कैन स्टॉप देम नाउ। बोलते हैं गोल साहब आपने इतना अच्छा काम किया है लोगों के लिए, दे विल गो ऑल ओवर द वर्ल्ड, नोबडी कैन स्टॉप देम। फिर क्या हुआ, मैं आपको कह रहा था कि एक पीरजादा हुआ करते थे कश्मीर में, बख्शी साहब के फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज अ गाय कॉल्ड पीरजादा। वो डैडी को लाइक करते, बिकॉज इतने काम किए थे तो डैडी को जानते ही थे वो। उनकी from a very high family, he had 2 sons and 1 daughter. 1 daughter is still my friend, Lily. She was in Lahore, now she is in Singapore. She is in Singapore. I will वो black and white houses में रहती है, जो आपके खतरनाक माने जाते हैं, colonial houses। Heritage homes, right. जब मैं उसके पास जाऊंगा तो मैं आपको लेके जाऊंगा, let us go and meet her. तो वो लिली के भाई थे एक पीरजादा, he was इंडिया में मर्सिडीज बेंज जो थी उनके टॉप कार्डर में थे। वो डैडी को बोलते हैं, पूना में हम उनके पास गए थे एक बारी, आपके जो ये कश्मीरी पंडित जो लड़के आए ना, बोलते हैं इंटरव्यू में जर्मन्स आर गेटिंग फ्लैबरगैस्टेड। बोलते हैं कोल साहब मैं कश्मीरी मुस्लिम आते हैं वो इतने बकवास होते हैं, मैं अपना सर ऐसे करता हूँ कि मैं कोई जानता नहीं हूँ। कश्मीर जैसे व्हाट अबाउट दिस, बोलते हैं they may be from some village or some kind of, I don't know them much about. तो बोलता है even Mercedes Benz में भी had to take Kashmir because they're outstanding. Right. कहने का मतलब ये है कि एजुकेशन से क्या क्या नहीं हो सकता। Now I meet people all over America, a lot of women and boys take inbox करते हैं, विवेक we also have are the largest of that because of the this Thackre's largest, we are also the beneficiaries of it. कितने मुझे मिलते हैं, इंग्लैंड में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, बहुत लोग मिलते हैं। I feel so happy that वरना हमारा that was a game changer। अगर आप मुझे पूछोगे विवेक
एक चीज आप मुझे बताओ जो कश्मीरी पंडित से अच्छी हुई है 93 से अभी तक, इज द ठाकरे किड्स. द ठाकरे रिजर्वेशन सिस्टम हैज चेंज्ड आवर फॉर्च्यून्स. एक ने तो one is a ship owner, ship liner owner है, is a millionaire. So many millionaires it has produced. The reservation. Sky is the limit. That is true. This is the game changer, because Kashmiri Pandits have a gift of the gab. They have a good personality. Because of the centuries of education, education. And culturally, we are so grounded. I feel we are so grounded culturally. Yeah. The groundness जो है वो आपने अच्छी बात कही. मैंने इस पे पोस्ट में एक बार ही लिखा था कि हमारी जो groundness है ना, even if it is a minister, he will meet us if he is Kashmiri Pandit. There is no barrier. Kashmiri Kandur can have a direct access to a Kashmiri Pandit Muslim, minister also. There won't be a barrier. We are actually classless. हम hospitality में believe करते हैं. We do not look into your आपके जेब में कितना पैसा है. We are a very classless society that way. तो इसका फायदा ये हुआ है कि wherever Kashmiri Hindus have gone, they have made a niche for themselves, whether it be Sweden हो या Germany हो या America हो या Canada हो या कहीं पे भी हो. So these Thakre kids have been our greatest asset. Yeah, that is true. And I do want to remind all the viewers who are watching today कि जो भी निकले इतने बुरे टाइम से गुजरे, but because of our education, because of our culture, because of the strength and resilience that we had, and the belief in non-violence and the belief in education, that education is going to take us forward and not picking up arms. I think all of those, that thinking and that thought, I think is what has brought us to where we are today, where we are doing well. और जैसे आपने कहा इतना अच्छा feedback मिला आपको. Dr. Kaul, I don't want to let you go today, but वक्त का तकाजा है. हम वक्त से बहुत आगे निकल गए हैं. मगर I do want to invite you back to my show because आज हमने history की बात की और मैंने आज आपको अपने व्यूअर्स से मिलवाया हिस्टोरियन के तौर पे, और आपने इतनी खूबसूरती से इतने अच्छे एनेक्डोट्स सुना कि अपनी पर्सनल लाइफ और सोशल हिस्ट्री को कश्मीरी पंडित्स की आपने इंटरकनेक्ट किया और वीव किया. सो थैंक यू फॉर दैट. नेक्स्ट टाइम आई वुड वांट टू इनवाइट यू बैक एंड होपफुली टॉक टू यू अ लिटिल बिट मोर अबाउट maybe our culture and also the future. आगे क्या है? What is the moving forward stage? Because I do want to know, as I'm sure a lot of people want to know, कि 5th August 2019 के बाद what now? अब आगे क्या changes होंगे? So वो सब बातें आपसे पूछेंगे हम एक अगले एपिसोड में. मगर आज के लिए आपको जाने से पहले, I know you're a foodie, sir. I want to ask you, and आपने पहले यखनी भी mention की आपका favorite कश्मीरी मील या कश्मीरी डिश क्या है? अरे ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है ना. मेरा सवाल है. There's so many choices. जितना अर्ठम का खाना भी बहुत अच्छा लगता है. अर्ठम में सामन, दाल, हमारी जो वो नदर चुरमा या नदर मुंज, वो भी बहुत अच्छा लगता है. an ideal dish अगर आप बताओगे तो मुझे I like fish with munja. Wuzzle. Anything wuzzle I like. रोगन जो अच्छा लगता है. But even munjas on their own, wuzzle जिसको munj रोगन जोश बोलते हैं, वो भी अच्छा लगता है. These are my और हाथ से खाना और थाली में. थाली यहाँ पे भी है कश्मीर की. बिल्कुल. आपने ऑक्सफोर्ड में भी आप कश्मीरी थाली लेंगे. मेरे 2 बच्चे हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे कभी. वो थाली में खाते हैं. They have small, कश्मीर में 2 किस्म की थालियां होती हैं, छोटी वाली और बड़ी वाली. वो भी थाली में खाते हैं. Oh, what a joy. And sir, it is such an honor and a pleasure to be talking with you today. And I'm sure हमारे viewers को भी आज बहुत मजा आया होगा. And we do look forward to seeing you again soon, very soon on this show to talk about the future and the children and the new generation. There is so much more to talk about. Yes. Thank you so much for your time today, sir.
And for the viewers, I really thank you. आप हमारे साथ जुड़े रहे. Thank you. कहानी कश्मीर की को encourage कीजिए, support कीजिए, देखते रहिए. अगर आपकी कोई personal story है जो आप share करना चाहते हैं मेरे साथ और मेरे साथ उसके बारे में बात करना चाहते हैं, please मुझे US number 513-488-5070 पर contact कीजिए and I will invite you to my show and I would love to have you and talk to you. So thank you everybody. Which is Tuhun Deepika Zutshi. Namaskar. Namaskar. Namaskar.